Welcome back to my YouTube channel, Auritro's English Guide. After a prolonged gap of 3 months, I have come up with a new video, and this is on request of one of my students. I have prepared this particular presentation, and today's topic is force. So you people might ask me why I have chosen a completely different topic. Why not English? So let me tell you one thing. Basically, I teach all science group subjects apart from English. So that is the reason why I have come up with this particular video. As promised, I am going to explain everything in 3 different languages, in English, Bengali and Hindi. Try to bear with my poor Hindi. My Hindi is not up to the mark, but still I will try my level best to explain things in Hindi as well. So let's get on with the topic. So first and foremost thing is the definition. What is force? Force is an external agent capable of changing the state of rest or motion of a particular body. Force के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक चीज़ जो कि इन रेस्ट है, मतलब जिसके पास कोई मोशन नहीं है, जो एक जगह में स्थिर है, उसको चेंज कर सकते हैं, और जिसके पास एक मोशन है, जिस पर्टिकुलर बॉडी के पास एक मोशन है, उसको भी हम लोग उसका जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको रेस्ट में ला सकते हैं. So we can change the state of rest or motion of a particular body through force. ফোর্সের সাহায্যে কোনো স্থির বস্তুকে আমরা গতি দিতে পারি, কোনো গতিশীল বস্তুকে আমরা স্থিতিশীল করে দিতে পারি. It has a magnitude and a direction. এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে এর একটা স্পেসিফিক ভ্যালু থাকবে এবং এর একটা ডাইরেকশন থাকবে. से फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल मैच चल रहा है जहाँ पे स्ट्राइकर्स एक दूसरे के साथ बॉल पास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉल पास क्यों करता है? बॉल पास इसलिए करता है क्योंकि फुटबॉल को एक दिशा देना होता है. ফুটবলকে আমি একটা ডাইরেকশনে পাঠাতে চাচ্ছি. একজন স্ট্রাইকারের থেকে আরেকজন স্ট্রাইকারের মধ্যে যখন বল পাস হচ্ছে তখন তার মধ্যে অবজেক্টিভ কী থাকে? যেন একটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনে বলটা যেন পাস হয়. তো ডেফিনেটলি that is the reason behind applying a particular force, and the application of force is the point where the force is applied. তাহলে application of force कौन पॉइंटটাকে বলবো? किसको कहा जाता है application of force? जहाँ पे हम लोग वो फोर्स को अप्लाई करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है application of force. Next is a force is a push or pull upon an object resulting from an object's interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects. When the interaction ceases, the two objects no longer experience the force. इस पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है. At first we'll learn the effects of force. So in physics, motion is defined as the change in position with respect to time. First and foremost thing, let me tell you one thing. These two chapters, force and motion, these two chapters are connected to each other. If you don't know what motion is, if you don't know what acceleration is, you won't be able to understand force and pressure. So I will give you a fair amount of idea about velocity, acceleration, displacement, all sorts of things. But before that, let me tell you what happens. In simpler words, motion refers to the movement of a body. Motion means जब एक बॉडी के अंदर एक मूवमेंट होता है उसको मोशन कहा जाता है. Typically motion can either be described as the change in speed and change in direction. ठीक है, तो हम क्यों अभी मोशन को स्टडी करेंगे? Why do we need to learn motion? Because motion होता है, motion exactly happens. Why it happens? Because of the application of force. हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं, इसलिए मोशन होता है. Okay, suppose if you want to open a particular window or if you want to open a particular door, you can either push or pull. In certain cases you have to pull the door, in certain cases you have to push the door if you want to go out or if you want to come in. So it depends upon the kind of result that I want to have. Accordingly I will apply a force. Force can make a body that is at rest to move,
It can stop a moving body or slow it down. তো हम लोग মুভিং বডি को जैसे कि রেস্ট में भी ला सकते हैं, আমরা মুভিং বডিকে স্থির অবস্থায় আনতে পারি, আবার এট দ্য সেম টাইম মুভিং বডির যে স্পিড আছে সেই স্পিডটাকেও আমরা স্ল্যাশ করতে পারি। ওকে, উই ক্যান স্লো ইট ডাউন। ইট ক্যান অ্যাক্সেলারেট দ্য স্পিড অফ আ মুভিং বডি। অবভিয়াসলি আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে একটা ভেহিকল which is running at 40 km/h, say for example, if we press the accelerator, the speed will go up, acceleration will happen. What will happen? It will start moving at a speed of maybe 60 km/h. So there will be some kind of acceleration. So it can also change in the direction of a moving body. আমরা মুভিং বডির ডাইরেকশনও চেঞ্জ করতে পারি। সব থেকে ক্লাসিক এক্সাম্পল হবে যেটা আমি একটু আগেই বললাম, সেটা হচ্ছে পাসিং অফ ফুটবল ডিউরিং আ ফুটবল ম্যাচ। তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। नेक्स्ट আমরা চলে যাই यस आवर डे टू डेज एक्सपीरियंसेस। मैंने पहले भी कहा था कि फोर्स में जो सेकेंड पॉइंट वहाँ पे मैंने कहा था कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, उस पॉइंट के लिए हम लोग डे टू डेज एक्सपीरियंसेस को ले सकते हैं। इस पॉइंट को नंबर टू को समझाने के टाइम में मैंने बोला था पुश और पुल का ये जो एग्जाम्पल है, some kind of interaction with the object, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए ये वाला स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी हम लोग टच करने वाले हैं। सो आवर डे टू डेज एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल। Let's recall some of our everyday experiences. What exactly do you do to make a football move? Or what you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? कैसे करते हैं ये सब? गोलकीपर जब स्टॉप करते हैं उस फुटबॉल का एक मूवमेंट होता है, उस फुटबॉल का एक मोशन होता है rather. Now what the goalkeeper does? Goalkeeper jumps onto the ball. ठीक है, कहीं पे भी जंप नहीं करेगा, उसी डायरेक्शन में जंप करेगा जहाँ पे बॉल आ रहा है। सो डायरेक्शन ऑल्सो कम्स इन टू प्ले। सो दैट इज वाई आई हैव बीन मेंशनिंग इट दैट फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, केन मूव करबे? कारण गोलकीपर बॉलटाके आटकाते चाय, जाले जड़ानोर थेके गोलकीपर बॉलटाके आटकाते चाय, সেই জন্য গোলকিপার মুভ করবে। সিমিলারলি একটা ফিল্ডার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে কি করে? ক্রিকেট গ্রাউন্ডে একটা ব্যাটসম্যান স্কোয়ার কাট মারছে, অন ড্রাইভ মারছে, অফ ড্রাইভ মারছে, যাই মারছে না কেন, সাপোজ দ্য ব্যাটসম্যান ওয়ান্টস টু স্কোর আ বাউন্ডারি। এবার ফিল্ডারের অবজেক্টিভ কী হবে? ফ্রম আ ফিল্ডার্স পার্সপেক্টিভ, ওয়াই উইল হি ট্রাই টু স্টপ দ্য বল? সো দ্যাট দ্য বল ডাজন্ট টাচ দ্য বাউন্ডারি রোপ. So there would be a specific objective behind applying a force. So these are the examples which we can take into consideration while we try to understand what exactly force is. So the next one is unit of force. Now we'll understand the unit of force. It can be measured in CGS unit, it can be measured in SI unit as well. In CGS, force is expressed in dyne. And in SI unit, this SI unit can also be called as MKS unit, meter kilogram second. So it is expressed in Newton. Now effects of force on an object will go in detail. Force can set a stationary object in motion. इसका मतलब क्या है? एक stationary object, stationary means which is at rest, जिसके पास कुछ movement नहीं है, একটা স্থিতিশীল বস্তু, তাকে আমরা গতি দিতে পারি, তার মধ্যে একটা মোশন ক্রিয়েট করতে পারি, हम लोग एक मोशन जनरेट कर सकते हैं। When force is applied on a stationary object, the object tends to move in the direction in which force is applied. আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, force would be applied in a particular direction. The second point is force can either stop or slow down the moving object. Force needs to be applied on a moving object either to stop it or to slow it down. For example, the moving ball can be stopped by applying external force. Like I already gave you an example of the cricket ground. What happens in the cricket ground?
The fielder doesn't want the cricket ball to touch the boundary rope, and that is the reason why he tries to stop the ball. So I will move on to that particular slide. What is my third point? Force is applied to change the direction of moving object. I've already given a classic example of what happens on the football ground, what exactly happens between two strikers while passing the ball. So basically, the force is applied to change the direction of a moving object. Force हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। তো আমরা আমি আবার বাংলায় বলে দিচ্ছি, ফোর্স আমরা সেই কারণেই অ্যাপ্লাই করি যাতে আমরা মুভিং অবজেক্টের ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে পারি। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট ইজ দ্য শেপ অফ অ্যান অবজেক্ট ক্যান বি চেঞ্জড বাই অ্যাপ্লাইং ফোর্স। তাহলে আমরা লাস্ট পয়েন্টে কি বুঝবো? লাস্ট পয়েন্টে বুঝবো যে কি করে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে আমরা একটা অবজেক্টের শেপ চেঞ্জ করতে পারি। হাউ উই ক্যান চেঞ্জ দ্য শেপ অফ অ্যান অবজেক্ট বাই অ্যাপ্লাইং আ ফোর্স। কনসিডার আ রড হুইচ ইজ সার্কুলার ইন শেপ। একটা রড যেটা गोलाकार বা गोलाकृति बोला যেতে পারে, गोल टाइप का एक रॉड को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जिसको हम हैमर करेंगे। हैमरिंग मीन्स व्हाट? वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑनटू इट। बाय हैमरिंग द रॉड व्हिच इज अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, द रॉड कैन बी टर्न्ड इनटू अ फ्लैट शीट। So that is my objective behind applying this kind of force. So there could be n number of reasons behind applying a force on an object. Next is about the formula, which is of utmost importance while doing the problems. The quantity of force is expressed by the product of mass and acceleration. Mathematically, the equation can be written as F is equivalent to the product of m and a, where m is the mass and a is the acceleration. I have mentioned a few problems in here. First problem says 0.15 kg of coconut falls out of its tree. The acceleration due to gravity is 9.80 meter per second square. Down. Obviously it will fall down, it will not go up. What is the force acting on the coconut due to its gravity? Very simple thing. Here m is given. M is the mass. It is given as 0.15 kg. It is given in SI unit. And the second one is, I have no problem with this as well. It is given in SI unit only. 9.80 meter per second square. So what I have to do is I have to simply multiply 0.15 with 9.80 meter per second square. But don't forget to mention the units. Whenever you are going to show the calculation, you have to mention the units. F is 0.15 kg multiplied by 9.80 meter per second square. Newton is the product of kg multiplied by meter per second square. And the product would be 1.47. So the force due to gravity acting on the coconut is 1.47 Newton. The second problem you must take as an assignment. A man pushes a 50 kg block of ice across a frozen pond. He applies a force of 25 Newton, pushing the block away from him. What is the acceleration of the block? You have to do it on your own and mention in the comment box as to whether you have liked this particular video or not. And if you like my contents, what you have to do is you have to subscribe to my channel and like this video as a token of appreciation, and share this video as much as possible with the needy ones. So do take very good care of yourself and stay home, stay safe, and yes, of course, study hard. See you in the next episode with a fresh new topic. Bye bye.